Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good and safe at home. Yes, dear students, yesterday we have completed our chapter 11, that was foreign exchange rate. And today, as yesterday I told you, we are going to start chapter number 12, that is balance of payments. And this chapter is the last chapter from macroeconomics and from this unit also. So, dear students, let's proceed for the topic. Yes, here is chapter 12 and the chapter name is balance of payment. Okay, so what we will study in this chapter and what are the contents of the chapter. First is BOP meaning, balance of payment account meaning. Second, components, structure of BOP account, current account, capital account and official reserve account. And then equilibrium and disequilibrium in BOP deficit, surplus, and all we will study in this chapter. So let's proceed for the meaning of BOP, balance of payment. Yes, beta. So balance of payment is a statement of account showing all the monetary transaction of a country with the rest of the world during a period of time, generally 1 year. Okay, it means it is a statement. ये एक statement है which showing all the monetary transactions, जितनी भी monetary transactions हुई हैं, it is showing all the transactions. Or monetary transactions means economic transactions of a country with the rest of the world. It means India is doing any monetary transaction with any country of the world. किसी भी country के साथ अगर कर रहा है within one accounting period, एक साल में. So simple meaning is there. It is a statement of account showing all the monetary transaction of a country with rest of the world during a period of time. Okay, during a one accounting period. Okay, dear students, so what include in this, what is the components of BOP? So now move to the next point. Yes, here are the components of BOP. BOP has three things. So what are these things? Yes, first is current account, second capital account, third official reserve. Official reserve means a reserve which is created by RBI. Yesterday we have completely managed floating, that how RBI sell and purchase the foreign currencies in the international money market. So it is the same official reserve created by the RBI, central bank of our country. So now today we will discuss about the current and capital account, and tomorrow we will discuss about the official reserve account. So now, what is current account? Current account records receipts and payments of foreign exchange on account of such transaction which do not impact assets and liability status of a country. It means any transaction which we are going to record in current account of BOP will not impact assets and liability status of the government. current account के किसी भी transaction से government की assets and liabilities पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So which types of transactions are here? So here are the components. Okay, so it means these transaction does not give any future claims, क्योंकि ऑन द स्पॉट वी आर डूइंग ट्रांजेक्शन्स, एसेट्स लाइबिलिटीज़ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. सो इन्हें फ्यूचर क्लेम्स के लिए नहीं रखा जाता है. दीज आर फॉर द प्रेजेंट ओनली. ओके, सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. इट मीन्स सबसे पहले एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होगा. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स मीन्स मर्केंडाइज विजिबल आइटम्स विच कैन बी सीन, जिसे हम इजीली देख सकते हैं, जैसे सेलुलर फ़ोन है, मशीन्स हैं. ओके, दीज आर द विजिबल थिंग्स. तो सबसे पहले एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है. सेकेंड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. जितनी भी सर्विसेज आर नोन एज इनविजिबल्स. ये इंटेंजिबल होती है, नॉन मेटेरियल होती है, इन्हें हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील ओनली. Okay, but further services are divided into three parts. First, factor service. Factor service means which are normally earned or paid for the factor use of factors. प्रोडक्शन फैक्टर्स को यूज़ करने के लिए जो हम पे करेंगे या फिर जो रिसीव करेंगे, दैट इज़ फैक्टर सर्विस. फॉर एग्जांपल, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दीज आर द फैक्टर सर्विस. और ओवर रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर द टाइप्स ऑफ फैक्टर सर्विस. जो प्रोडक्शन फैक्टर्स के एक्सचेंज में हमें मिलेगी, दैट इज़ फैक्टर सर्विस. जो हमें अपनी मेहनत से मिलने वाला है, दैट इज़ फैक्टर सर्विसेज. ओके, नॉन फैक्टर सर्विसेज मीन्स इट इंक्लूड ऑल द सर्विसेज अदर देन फैक्टर. फैक्टर सर्विसेज के अलावा जो भी सर्विसेज हैं, दैट इज़ नॉन फैक्टर, लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन. दीज आर द
non-factor services. Okay, these are the part of services, but these are not a part of factor service. Factor service में आपका land, labor, capital और entrepreneurship आएगा. Okay, and non-factor services means insurance, banking, transportation. These are the non-factor services. And one more part of services is, yes, current transfer. Current, as you all know, in the national income we studies about the current transfer means free transfers, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, वन साइडेड ट्रांसफर्स मीन्स गिफ्ट, ग्रांट, रेमिटेंस, ये हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजने होते हैं. सो करंट ट्रांसफर ऑल्सो पार्ट ऑफ services. Okay, so what we have completed current account. In current account there are the three things. Okay, first export of goods, import of goods, these are the first point. Then after, or it is known as visible. Okay, export or import of goods हो रहा है, that is visible. Invisible means types of services, or services has three types. First is फैक्टर सर्विस, जो हमें प्रोडक्शन फैक्टर्स के एक्सचेंज में मिलेगी. नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा. करंट ट्रांसफर, गिफ्ट, ग्रांट्स एंड एनी डोनेशन, चैरिटी, दीज आर द economic transactions, but not in the form of monetary, not in the form of income. These are the current transfers only, one sided payments. Okay, so it means I think it is clear to you that what is current account. Current account means it is that account which records all the transactions which does not impact the assets and liabilities status of the government, जिससे assets and liabilities पर फर्क नहीं पड़ता. It has two parts. फर्स्ट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जो विजिबल होता है जिसे हम देख सकते हैं. सेकेंड इज इनविजिबल, जिसमें ऑल सर्विसेज आएंगे, और सर्विसेज में फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस और करंट ट्रांसफर्स आएंगे. ओके, सो रीड केयरफुली, वेरी केयरफुली इन योर बुक बेटा. देन आफ्टर देयर इज वन मोर क्वेश्चन, दैट व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स बेटा export of goods minus import of goods. Export only goods not services. तो export और import of goods का जो difference होगा, that is BOT, balance of trade. Okay, yes. So next is second part is capital account. What is capital account? So normally capital account includes all those transactions which impacts the assets and liabilities status of the government, जिससे assets and लाइबिलिटी स्टेटस पर फर्क पड़ेगा. और दीज मेंट फॉर द फ्यूचर क्लेम्स. जो भी करंट ट्रांसफर्स होते हैं, करंट अकाउंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो फ्यूचर क्लेम्स के लिए नहीं होती हैं. ओके, बट कैपिटल अकाउंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी फ्यूचर क्लेम्स के लिए होती है, बिकॉज वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इम्पैक्ट करती हैं. तो लुक एट द कंपोनेंट्स. फर्स्ट, बोरोइंग्स. अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी से बोरो कर रही है मनी, सो इट मीन्स ये हमारी लाइबिलिटीज़ को बढ़ाएगा अगर हम बोरोइंग्स कर रहे हैं तो. सेकंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अगर फॉरेनर्स हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेगा, एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएगी. देन आफ्टर these two points are very important and basic component, principal components. Then after, three other components are here. NRI deposit, it means any known residents of Indians if deposit money in India, it is a part of capital account. उससे भी हमारी banking capital increase होगी. Banking capital other than NRI deposit means any other countries bank deposit money with RBI, with commercial bank, so it is a banking capital. ये भी हमारी assets को increase करेगा because money is a part of asset of the country. Short term credit, it means from for the immediate payment. If we are borrowing, our country borrowing from the international money market some money, so it is a part of liability. Okay, it will increase our liability. So short term credit is also part of capital account. So current account has two parts, visible and invisible. Okay, it means export and import of goods and export and import of services. But capital account has five components: borrowings, foreign investment, NRI deposit, banking capital and short term credit. So look at here is the flow chart for that. Yes, components of capital account: borrowings, external commercial borrowings and external assistance. So just differentiate between both. External commercial borrowings means that at a high rate we are taking money in the from the market, and for the low rate if we are taking money from the market, that is external assistance. Assistance means economic help. Okay, तो ये हमें कम रेट पर मिल जाएगा.
इंटरेस्ट रेट पर। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपकी FDI, FII, और थर्ड NRI डिपॉजिट, फोर्थ बैंकिंग कैपिटल, एंड फिफ्थ शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अब ये आप कहोगे कि मैम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो बेटा FDI मीन्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी अदर कंट्री परचेजिंग असेट्स इन इंडिया, that is FDI, or if they are just investing money in shares or debentures in Indian company, that is FII, foreign institutional investment. Okay, so I hope you understand today's topic. So do all the notes in your fair notebook, and if you are facing any doubt beta, so you can call me anytime. Okay, so God bless you, stay blessed at home.